हेलो एंड वेलकम टू DigiHunt। माय नेम इज संदीप और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पंगा की। पंगा इज द स्टोरी ऑफ अ वुमन who is married, she has a kid and she has somewhere down the line while working for her family, while providing for the daily needs and the requirements of her family, she has forgotten about her own self। उसकी खुद की क्या वजूद है, उसका खुद का क्या अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में गुम होकर रह गया है। And it is the story of this lady finding her own path, finding her own destiny and fighting with her stars to achieve what she desires in it. Panga mein Kangana Ranaut plays the role of Jaya Nigam. Jassie Gill plays the role of Prashant Nigam. Neena Gupta is Kangana's mother and Richa Chaddha is cast in a very special role as Meenu, who is Kangana's friend from college. फिल्म में जिस तरह से कहानी बयान की गई है, इतनी खूबसूरती से, इतना सटल तरीके से कि मुझे लगा ही नहीं किसी भी वक्त कि मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ। That is the beauty of the film and Ashwini has done it in a wonderful and absolutely natural way. मैं फिल्म की डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, अश्विनी अय्यर तिवारी। वी हैव सीन हर फिल्म्स इन द पास्ट, वी हैव सीन नील बटे सन्नाटा, वी हैव सीन फिल्म्स लाइक बरेली की बर्फी एंड शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब इन दोस फिल्म्स टू। एंड इन दिस फिल्म आल्सो शी वर्क्स वंडर्स इन द सटल वे शी प्रेजेंट्स द फैक्ट्स इन द duels and the fights in the psyche of a lady who is married and who is tied up and who's torn between her family and her innate desires. Talking about the performances, there's not much to the story. It is a very simple storyline and yet the treatment of the story is what really counts. I personally felt that Kangana was superb in her roles. Kangana is a superb actor. We have seen her in Gangster, in Wo Lamhe, in Manikarnika. We have seen her in Judgmental Hai Kya and scores of other films. And she has always managed to wow her audience with her acting skills, and that is the true mark of an actor. She has proved it time and again, and she has proved it once again with Panga and her role of Jaya Nigam. Jassie Gill की अगर हम बात करें तो he is playing the role of this affable हस्बैंड जो अपने बीवी से बहुत प्यार करता है एंड ही सपोर्ट्स हिज वाइफ। कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं, ये भी जान जाते हैं कि ही टेक्स प्राइड इन द फैक्ट जब लोग उसे अपनी बीवी के नाम से पहचानते हैं। फॉर इंस्टेंस एक सीन है जहाँ पर ही इज टॉकिंग टू मीनू एंड ही इज टेलिंग हर लुक एट हर, शी इज माय वाइफ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर। It is a very supportive character and yet he is not without his faults. He is not without his faults. We are all men. We know it for a fact that there are certain things that the women do best. They're very organized. Men are not as organized and we've got to admit it. So once Jaya embarks on her journey to get what she desires innately, we see Jassie is kind of torn apart between serving his son and at the same time looking after his own job. So until unless Neena Gupta comes into the picture, things are really worry with him. But at the same time, he's never telling his wife कि तुम सब कुछ छोड़ के घर पे आ जाओ because मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो रही है, मैं कर नहीं पा रहा, तो you come back. He never wants to say it. कभी कभार ऐसा होता है बहुत ही, I mean, the film has been inspired by the real life incidents of any couple for that matter. So there is a tremendous relatability factor is what I'm trying to drive at. इतना relatable है कि कहीं ना कहीं आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आप अपनी ही कहानी देख रहे हैं, अपने ही परिवार की कहानी देख रहे हैं. So that is the merit of the film, and the film is so smooth flowing. Talking about characters even more, we have Richa Chaddha, who's playing the role of Meenu in the film. Meenu is Kangana's childhood friend, not childhood actually, teenage friend. College से उन लोग एक साथ रहे हैं और कॉलेज में उन दोनों एक साथ कबड्डी खेलते थे और दोनों ने ही नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का टाइटल दोनों ने मिलके जीता था. एंड नाउ मीनू इज अनमैरिड व्हाइल कंगना इज मैरिड, सो बोथ ऑफ देयर लाइव्स आर लाइक स्टार्कली डिफरेंट, जिसकी वजह से मीनू का माइंडसेट कुछ और है, कंगना का माइंडसेट कुछ, मतलब मीनू का माइंडसेट कुछ और है, जया का माइंडसेट कुछ और है. आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली टेकिंग कंगना's नेम बिकॉज शी इज सो वेरी शी इज all over the movie for that matter. The point that I was trying to make is just because of the difference between when a woman is married and when a woman is unmarried, the way it has been projected in the film is just wonderful. Because when we see Meenu's mindset, we realize that she is married, she's pretty free, she doesn't have to be in the shackles of her family. उसके लिए एक रिश्ता आता है, वो मतलब बिना किसी बात को सोचे समझे वो ठुकरा के कलकत्ता निकल जाती है जब कंगना wants a coach for her. दिस इज़ व्हेन वो अपनी दूसरी पारी खेलना चालू कर रही होती है.
So these differences have really been etched out very nicely. फिल्म के एडिशनल डायलॉग्स लिखे हैं अश्विनी आर्य तिवारी के हस्बैंड नितेश तिवारी, जिनका मच अक्लेम दंगल हम लोगों ने देखा है, and we've all appreciated it. The dialogues, for that matter, maybe because of the fact that the additional dialogues have been written by him, are so good, worked upon, and they are not something very flashy. मतलब शेर व शायरी घुसाया नहीं गया ज़बरदस्ती से. कहीं ना कहीं हम क्या कंगना के कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हैं. वी ऑल हैव विमेन इन आवर लाइव्स, बी इट अ मदर, बी इट अ वाइफ, बी इट अ डॉटर. सो to a certain extent, the way Kangana portrays it, and it also has got to say much about the fact that she has been she is completely rooted into the soil, and she knows how things happen in the interiors of our country, and she brings that out so nicely, and she's brought that out in this film as well, and she's done a swell job. Besides Kangana, Nina, Richa, and that little small guy 7-8 सालों का जो बच्चे का किरदार निभाया है, कंगना के बेटे का किरदार निभाया है, he too kind of infuses a sort of a warmth in the film, and he does it in such a natural way that मतलब वो शैतानी भी करता है, शैतानी के साथ साथ उसमें दिमाग भी है, और मतलब हर एक इंसान जो थिएटर में बैठा रहेगा कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाएगा, और कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस करेगा कि जैसे जब मैं छोटा बच्चा था शायद मैं ऐसा ही था, या मैं ऐसा ही था. There is one scene when वो बच्चा जो है, कंगना का बेटा जो है, बहुत गुस्सा कर रहा होता है अपनी माँ से, because she was unable to attend his sports meet, and वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अपनी माँ से बात नहीं कर रहा है, बहुत खरी खोटी सुना देता है अपनी माँ को, जिसकी वजह से उसकी माँ का दिल भी बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है वो. तब the father makes the child understand in such a wonderful manner. वहाँ पे कोई मतलब the father is not raising the voice, the father is not raising his hands on the child, and he is just trying to make him understand in a very civil and in a very conversational manner, in a very mature manner to be precise. And वो जब लड़का, वो जब बच्चा जब सारी चीज़ें सुन के समझ जाता है, he kind of shows the mirror to the father and he says that जब मम्मी ने बोला कि मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ के, कबड्डी छोड़ के वो मेरे पीछे, मेरे ऊपर ध्यान देगी, तब उनको आपने क्यों नहीं रोका? कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं. And that's when the realization strikes Prashant. He realizes to a certain extent, दिखाते नहीं है पर चेहरे पे expressions हैं. He realizes that whatever he's done, perhaps he too has kind of taken an undue advantage in a very indirect manner. Because earlier जब भी उनकी बीवी कबड्डी खेलती थी, he was very supportive of her. But when the child kind of tells him that you were wrong somewhere, that's when the tables turn. और वो जो बच्चा है, he eggs the mother to start off all anew. एक लाइन है फिल्म में कि मम्मी का उम्र कितना है? The father says she is 32. तो 32 साल की उम्र में the guy says, तो 32 साल की उम्र में कम बैक नहीं होता क्या? I mean that actually goes up to show to what an extent a child can be mature. जो हम बोल देते हैं ये बच्चा है, बच्चा दिमाग है और बहुत immature होगा. It's not always the case. So you cannot generalize, is what this film kind of teaches you. And it doesn't preach. You see it and you realize for yourself. And that's the beauty of the film. The other parts that I want to focus on is the edit, the sound, the color grading and everything, technical for that matter. The film is an absolute smooth flowing film. कहीं ना कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कट है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा जंप हो रहा. It's also smooth flowing. And this also is a feat that cinemas for that matter want to achieve. Any extraordinary cinema, when you watch an extraordinary cinema, you will not see or you will not find any glitch in the narrative, and it just is smooth flowing, and that's what this film is. Every good film endeavors to achieve what Panga has achieved. All in all, it is a wonderful film. This weekend you must go for Panga, and if with no one else, go with yourself, go with your own intellect. So there is this part, film के आखिर में एक छोटा सा एक part है जहाँ पर Kangana feels dejected and she kind of is bogged down by her age and the limitations that age brings with it. She's playing for the Indian Kabaddi tournament, and she tells her family कि आप लोग यहाँ से चला जाओ, because somewhere or the other she feels that she'll not be able to perform, and underperforming in front of your family is not really a good thing for you as a performer, as a person, and the ego is really hurt badly. So चले जाओ. She is not quite aware of the fact that still sitting there, वहीं पे बैठे हुए हैं and they are watching her game. She is absolutely unaware of the fact. वो
अपनी तरह से, जिस तरह से वो जब जवान थी, जब शादीशुदा नहीं थी, तब जिस तरह से फ्रीली खेलती थी, बिना किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान दिए हुए, अगर मुझे आज चोट लग जाएगा तो क्या होगा, अगर मेरा कल सर फट जाएगा तो क्या होगा, शी डजंट थिंक ऑल ऑफ दैट and she just goes and gives it 100%. That happens when you are free from the headache that your family brings to you, that you've got to be very careful. You एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर को क्रॉस करके नहीं जा सकते बिकॉज यू हैव अ फैमिली. अगर कुछ ज़्यादा कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा. ऑल ऑफ दोज टेंशंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आर इरेज्ड फ्रॉम अ मेमोरी, इरेज्ड फ्रॉम अ माइंड, एंड शी गिव्स इट अ बेस्ट शॉट. एंड दैट सीन इज जस्ट टेरिफिक, I'd say. उसी वजह से मैं ये बात कह रहा था, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी कारणवश नहीं जा पाए सिनेमा थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स में ये फिल्म देखने के लिए, यू टेक योर ओन सेल्फ एंड यू गो देयर, यू जस्ट इमर्स योर सेल्फ इनटू द फिल्म, understand the film, take in the nuances of the film, and come back from the theater as a whole new different person. That's the beauty of the film, ladies and gentlemen. I'd say Panga is a wonderful film. It is a must watch for this weekend. A 4.5 stars out of 5. Thank you so much. This is Sandeep with DigiHunt.